Hello everybody, welcome to iExamBee's LegalBee. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. Welcome to the mock test series that we have started every day 11 a.m. exclusively at LegalBee. This mock test series is very beneficial for everybody as we are discussing not only subject wise but also topic wise questions, and this is going to be very helpful for competitive examinations especially. तो आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और इन PPTs के PDFs को बेसिकली तो आपके पास ये क्वेश्चंस का रिकॉर्ड भी रहता है. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन राइट टू अस एंड hello@iexambee.com और यू कैन सिंपली कमेंट इन द सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी आप आपके क्वेरीज लिख सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द नंबर दैट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.iexambee.com for more details. So let us start with the second video of constitutional law and the topic I will be taking up is fundamental rights. इससे पहले की वीडियो अगर आपने मिस की है कॉन्स्टिट्यूशन की तो आप चेक कर सकते हैं. The topic I have covered is preamble. Along with preamble, union and its territories as well I have covered. Now I will be moving to third part of the constitution which is very important from exam point of view. वो सारे topics मैं basically cover कर रही हूँ. So that is fundamental rights. इस related 10 questions हम लोग discuss करने वाले हैं. आप प्लेलिस्ट चेक करके बाकी टॉपिक्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस चेक कर सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज void ab initio, void, voidable, till the extent of inconsistency, void, void till the extent of repugnancy. सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वो ऑप्शंस देखकर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस को फ्रेम इस तरीके से किया जाता है. सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू हैंडल एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अप सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स इज ऑप्शन डी, टिल द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी वॉइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस देखकर आप कंफ्यूज हो सकते थे. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. सो टिल द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी इट इज वॉइड एंड दिस हैज बीन टेकन अप फ्रॉम द वेरी famous article, that is article 13 of the Indian Constitution, which says all the laws are inconsistent or which are in derogation of fundamental rights will become void, but till the extent of that inconsistency, यानी कि उतनी inconsistency के लिए वो void होगा. They are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void. Nothing in Article 15 shall prevent the state from making any special provisions for women and children. This is mentioned in which provision of the Constitution? यानी कि Article 15 में जो भी provisions है वो prohibition of discrimination के बारे में, right? तो ये सारे provisions स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेंगे. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्टली फ्रेम किया गया है इसलिए इसे ऐसे ब्रेक करके समझना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप क्वेश्चंस गो थ्रू करते हैं, ट्राई टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, ब्रेक डाउन देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट नाइसली, और एल्स व्हाट हैपेंस, वी सी द ऑप्शंस एंड देन वी गेट ऑटोमेटिकली कंफ्यूज्ड. सो फर्स्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. सो द प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन is mentioned in which provision of the constitution, यानी कि स्टेट अगर स्पेशल प्रोविजंस बनाता है और आर्टिकल 15 उसके आड़े नहीं आएगा, ये कौन से प्रोविजन ने लिखा है, दिस हैज बीन आस्क्ड टू यू. नाउ द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज एक्चुअली, 15, 2, 3, 4 एंड 5 क्लॉजेस है या फिर सीधे सीधे आर्टिकल 14 है. सो इसलिए ये ऑप्शंस देखकर और ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, बट आंसर एक्चुअली ईजी है. जिसे पता है वो बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकता है विद इन सम सेकेंड्स. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, that is Article 15 Clause 3 mentions this. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for women and children. So this is mentioned in Article 15 itself, that it is not mentioned in some other article. Right to education is dash as introduced by dash committee recommendations. Now sometimes what happens when we are studying constitutional law, always remember you have to study it very comprehensively. You have to be clear about the history also, you have to be clear about the committees also, at least of some of the important rights, especially fundamental rights के topic को लेकर या directive principles के topic को लेकर, and along with that you also have to go through the important article numbers. अब राइट टू एजुकेशन का हिस्ट्री अच्छा है, अमेंडमेंट्स भी आपको देखने ज़रूरी होते हैं, राइट? सो दैट्स वाई ऑलवेज बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. नाउ राइट टू एजुकेशन इज़ एन अमेंडमेंट, सो इससे रिलेटेड आपको अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए, कमिटी भी पता होना चाहिए.
So that's why I've taken up this question again. Right to education is a very important one. Now it is what? It is fundamental right, legal right, constitutional right, या उस कौन सी कमिटी है, सुप्रू कमिटी है, तपस मजूमदार है या नरसिम्हा राव है. So the correct answer is D. Right to education is a fundamental right as introduced by Tapas Panjumdar Committee recommendations. So इसकी history आपको पता होनी चाहिए. Which is the article? Article 21A, which is the amendment 86th Constitutional Amendment Act in 2002, provides right to education as a fundamental right in Part 3 of the Constitution. There was a landmark judgment of Supreme Court as well, उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स. सो ये भी जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो ऐसी जो लैंडमार्क चीज़ें होती हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन पर मैंने आपको बताया, ऐसे ही राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड भी थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री है, ऐसे राइट्स का आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवली. यू नेवर नो व्हेन अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम समथिंग, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. As for Article 24 of the Indian Constitution, no child of dash years of age shall be working in any hazardous employment in a factory. Now this is a direct question. Age पूछी गई है basically, and Article 24 of the Indian Constitution prohibits this. But what is the exact age which has been prohibited? And the ages that have been given are quite near. So if you know, then only you can properly correctly you can mark the answer, because guessing is not really easy in this question. So the correct answer is A, that is below 14 years, and that is directly mentioned in the article, that is Article 24. Article 12 of the Constitution of India, again a very important article, defines state to include what? This I think is an easy question. Article 12 में क्या क्या आता है इतना तो सब लोग बेसिक पढ़ते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, and it goes without saying that this is an important topic, and this is a very easy one as well. कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है बेसिकली, that is mentioned here. So the correct answer is D, government and parliament, government and legislature of states, and local or other authorities are included under the definition of state. Which of the following options is not correct about right to equality? Equality goes without saying, again is a very important topic from fundamental rights. Principal rule of equality is contained under Article 14 of the Constitution. Article 14 has two facets of equality. Article 14 is a combination of two principles of English and American origin. Article 14 to 18 of the Constitution deals with right to equality, and equality is an absolute rule. So which of the following options is not correct? It has been asked, remember that. So which of the following is not correct? If you have a sound knowledge about Article 14, you can very easily answer this question. So the last option is the wrong one, because there are exceptions to equality. Equality is also not something which is available to everybody. We have reasonable classification. We don't have absolute rule of equality here. Members of the armed forces, they are not subjected to certain laws. They have military laws, separate treatment they have. Then we have reservations. We have medical practitioners who are regulated by Medical Council of India. There are separate rules for them. And best example is again Article 361 of Indian Constitution, which talks about immunity to the President of India. So that is also something which is covered under this. So this is an exception to right to equality. Which of the following fundamental right or restriction is only available or to or against a citizen of India? This is something which everybody should know, that which articles are applicable to citizens and which articles are applicable to any person. So for example, Article 14 is applicable to any person in the country, whereas Article, अब वो आपको पता करना होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही पूछा गया है, which is applicable to or is against the citizen of India. Now from the question only you should understand that this is telling you two things, यानी कि ये अगेंस्ट भी हो सकता है सिटीजन के, सिर्फ टू नहीं है. टू देखकर हम लोग डायरेक्टली जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन आई वुड से, एंड द आंसर इज ई, बोथ ए एंड डी. Abolition of titles and freedom to practice any trade and profession. All these, Article 18 as well as 19. 19 is applicable to citizens, everybody knows that. But abolition of titles, this is also to the citizens, यानी कि citizens के against में जाता है कि ये सारे titles को citizens accept नहीं कर सकते. So this also you should know, and this question gives you a hint actually over here. 8th question.
Which fundamental right ensures right to freedom of religion? A very direct question this is. And the correct answer is D, Article 25. And 25 is the principal article over here, directly providing the right to practice and profess any particular religion, propagate any religion. This should be clear over here, that which is the article which is exactly providing that freedom. Which is the first written document of fundamental rights? Again, मैंने आपसे कहा था that you have to be comprehensive in your studies. Now, this is a question which is in and around the Constitution, not exactly in the text of the Constitution of India, but relating to the history of fundamental rights. तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, as you have to think out of the box, especially for the subject of constitutional law. You have to think out of the box. Always remember that. So the first document, it gets confusing when we see the options. So the correct answer is option A, that is Magna Carta. Magna Carta had come up when? In 1215. This was the first written document they have asked, right? Charter of Rights that was issued by King John of England. यूडीए चार्ट तो काफ़ी लेट आया, 1948 में आया. बिल ऑफ राइट्स भी लेट है. फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अगेन इम्पोर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी प्रोविजंस के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जो पिक किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारे जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए प्रिपेयर रहें. मीन्स यू शुड हैव आइडिया ऑफ दिस कि कौन सा प्रोविजन कौन से कंट्री से बोरो किया गया है. दिस इज़ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सो आई हैव टेकन अप दैट फॉर फंडामेंटल राइट्स. यू कैन डू दैट फॉर ऑल, for directive principles also, and for amendment also, for all the features. Now, fundamental rights has been derived from which constitution of which country? Easy answer, B, USA. United States has this concept of Bill of Rights. So that Bill of Rights is the source of fundamental rights that is enshrined in Part 3 of the Constitution of India. So this was all that I had to discuss with you all from fundamental rights. Some topics that I had to discuss. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and prepare 50% faster with iExamBee. Thank you everybody for watching this video. Have a good day.